and I belong to Ranchi. I belong to Ranchi, Jharkhand. I have 5 members in my family: my mother, father, my brother, my younger sister, and myself. Going to my educational background, I have completed my matriculation from Guru Nanak High Secondary School, Ranchi, and I have completed my intermediate from the same school itself. I have completed my bachelor in mechanical engineering from National Institute of Science and Technology, Odisha, and currently I am pursuing M.Tech in machine design from IIT Guwahati. And going to the projects and achievements in my B.Tech year, I was doing the project under on the topic study of mechanical properties under sand casting of aluminium, and now I am involved in the project on the topic experimental and investigation of bamboo fiber polymer composite for structural application. Also, I was during college days, I have participated in the national level robotics championship, and I was a member of the core team robotics club, and I was also appreciated for managing and teaching a group of 40 students in a workshop. That's all about me. Thank you. Okay, you just ended on teaching a group of 40 students आपने teach किया, right? Yes, ma'am. All alone you have taught? No, ma'am, in the group, ma'am. In the group. How many people were there in the group? 5 to 6, ma'am. 5 to 6. Suppose in future I make you a head of 40 people, right? You are a leader. You are the head Okay. of 40 people. How will you be managing those 40 people? What are the protocols which you are going to take? For managing, ma'am? Manage of 40 people, right? Yeah. Okay. First, we will be taking all the whoever are present. We will be first taking all the protocol that they are present or not. Uh, Along with that, we will be providing their for the safety that we have been organizing that event or anything workshop. So we will be the responsibility for their safety along with their management for their staying and the fooding for them. And also, unless the all everything is not properly ended, we are their uh, we are their families and everything. Okay. So Anjeet, tell me that you are currently not working anywhere, right? No, ma'am, I am doing, ma'am, M.Tech. M.Tech, right? So it's your second year? Yes, ma'am. You're not planning for campus placements? I'm planning, ma'am. So why PSU? You want to go for a PSU or you want to go for a campus placement? Both are different Uh, things. yeah, but it was my first dream that I will be choosing the first priority is for PSU, ma'am. Why PSU and why not the campus placement or private sector? Actually, I was always after the college from the B.Tech college, I was always dreaming to join PSU. That's why I filled the form for that, but I was not eligible for that. I can say I was not on that marks that I would be eligible for that. So I started doing some jobs, and then I came here, and then uh, this time I got the chance, so I have been opting for that now. Can you compare PSU versus private for me? Okay, ma'am. Uh, Actually, according to me, ma'am, PSUs offer it can be using PSUs offers good work-life balance, I can say, but it is not that there will be not work in pressure. Sometimes there is pressure, but as compared to private, it is a little bit less, I can say. Also, it takes care of your uh, families, and there is a many facilities like township is there, and these things, ma'am. Okay. Uh, Anjeet, what is the meaning of your name? What, ma'am? Sorry. What is the meaning of your name? Ma'am, my name is Anjit Kumar, and its significance is that it's undefeatable, ma'am. Undefeatable. Yes, Okay. Can you just tell me, Anjeet, what is your source of self-motivation and do you think that self-motivation actually works? yes, ma'am.
as it is one of my strengths, so I can say that actually I have failed many times in the life that I could not clear some exams, and I was very much sometimes I felt demotivated, but the self motivation along with the inner self motivation has motivated me to lot, and that's why I could be here, ma'am. That is, I'm asking you, what do you practice for self-motivation? For self motivation, ma'am, I do many exercises which releases the stress in me, ma'am. Like I do some yoga or I do running, I do gymming. This, ma'am, somewhat kills the stress, ma'am, and thus increases the self power and motivation. Okay, fine. So, Anjit, can you tell me three traits in you that makes you suitable candidate for this position? Uh, Ma'am, like I have a I can work in a team. I have some leadership skills also, and I think somewhat I am good in communication also. So, I think I can say, ma'am. Okay, fine. Right. See, Anjit, the very first thing is you were answering all the questions wrong, so I have to pause it out, right? The reason is the introduction is too long and you don't have to tell about your family background in the introduction. That's not required. Okay. Okay, The ma'am. whole focus should be on you. Good morning, ma'am. I'm Manjeet Kumar. I come from city this. Obviously, you've done your 10th, and that is why you've been able to do your graduation. So you don't have to read the form in front of them. You just have to tell your basic entities to make them you can say feel that you're a right candidate for them. Okay, so Okay, good ma'am. morning, ma'am. I'm Manjeet Kumar. I come from city or I hail from city this. Coming to my academics, I've done my graduation from this and this university, and currently I'm pursuing my higher education from this university in the stream of this. And my research proposal lies on this particular strength, or my area of expertise is these particular two subjects. ऐसा कुछ भी आप बता सकते हैं। ये आपकी इंट्रो आती है, ठीक है? तो मैम, इंट्रो हो गया। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट ये इंक्लूड नहीं करना। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट वो सारी चीजें आप मिस कर सकते हो। आपकी स्कॉलरशिप है तो आप बताओ, अगर नहीं है तो वो मिस कर दो पार्ट। ठीक हम्म, है। उसके बाद अपना ग्रेड हो गया, आप अपना इंटर्नशिप का बता सकते हो अगर आप चाहते हो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में से एक चीज जिसमें बहुत स्ट्रांग हो, सिर्फ उतनी चीज डिस्कस करो जो आप बहुत स्ट्रांग हो। लास्ट में अब आप ऐसी चीज पेंड करो जहाँ पे आपका अगला इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपने 40 पीपल की टीम मैनेजमेंट वो बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उसको चेंज कर दिया, बिकॉज अब बच्चों तो पढ़ाओगे नहीं, अब लोगों को हम्म, मैनेज करोगे। मैंने पूछा प्रोटोकॉल्स क्या है 40 लोगों को अगर मैं सिंगल हेड बना देती हूँ आपको। पहली चीज तो ये थी मैं सिंगल हेडेडली कभी भी मैनेज नहीं कर पाऊंगा 40 पीपल को, दैट्स नॉट अ पॉसिबल टास्क, राइट? हमेशा हमें क्या करना होता है, आगे डेलीगेशन करनी होती है। जैसे आपने क्या किया, 40 लोगों को 4 टीमों में डिवाइड कर दिया, 10-10 लोगों की टीम, राइट? हम्म, उसका आगे सब हेड बना दिया जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो आपने क्या बना दी, उनकी सब हेडिंग्स बना दिया, सब उनके हेड्स बना दिया, राइट? देन सब हेड्स वो क्या करेंगे, वो आपको रिपोर्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी मेंटेन होगी टीम्स में, राइट? और क्या आ जाएगा लास्ट पार्ट, ओपन कम्युनिकेशन रख रहे हो। कोई भी ओके, वर्कर को प्रॉब्लम है, आपने ओपन कम्युनिकेशन रखा है। एम्पैथी आप शेयर करते हो, ताकि एक अच्छे लीडर में एम्पैथी होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग करना अपने एम्प्लॉयज को, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, हाउ डू यू मैनेज अ टीम ऑफ 40 पीपल? सो मैम, मैनेजमेंट ऑफ 40 पीपल इज नॉट अलोन, आई एम नॉट अ डिक्टेटर की आपको क्या होता है। इन अ डेमोक्रेसी आपने देखा होगा, स्कूल्स में आप एग्जाम्पल देखते हो, प्रिंसिपल है, देन वीसी है, देन कोऑर्डिनेटर, कितने रोल्स एंड आगे आ जाते हैं, डिमार्केशन आती है। तो वो तो आप बता रहे हो गलत, ठीक है? उसके बाद आ जाता है वाई पीएससी, कभी भी ये लाइंस नहीं बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, कुछ भी ऐसे वर्ड्स, जॉब सिक्योरिटी, ये कभी नहीं बोला जाता है, दीज आर द रॉन्ग वर्ड्स। कोई बच्चा आके मुझे आपके आंसर्स बोल रहा है, कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैम मैं पीएससी में से जाना चाहता हूँ बिकॉज वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मुझे लर्न करने को बहुत अच्छा मिलेगा, प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर है, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ये चीजें आंसर देगा, मैं उसको चूज करूंगी कि आपको चूज करूँ। डायनामिसिटीज है, हम प्राइवेट भी बहुत अच्छा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्राइवेट सेक्टर टू, लेकिन प्राइवेट में कोर कंपनीज कम मिलती हैं हमें, प्रोजेक्ट स्टैटिक होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर कम होता है, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। मेरा इंटरेस्ट इसलिए पीएससी में, अदरवाइज वो द काम यू कैन से पीएससी एंड प्राइवेट दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन पार्ट। कोर डोमेन्स टारगेट करें तो वो कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है? वो चीज आती है, उसमें भी आप क्या करो, गलत कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद क्या आ गया, self motivation. Ma'am, I completely follow the theory of self motivation and I am a person who motivates myself. आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? जैसे आप बोलते हो कि मुझे हेल्प मिलती है, जैसे मैं बोल सकते हो कि आप कोई मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनते हो, वीडियो सुनते हो, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आप मोटिवेशन का ये भी बोल सकते हो कि आप चैंटिंग करते हो, कई बार पेरेंट्स से बात करके भी मोटिवेशन होती है, बहुत चीजें होती है, वो चीजें आप बोल सकते हो मोटिवेशन में, ठीक है?
अभी तो और Okay. भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप मोटिवेट कैसे रहते हो अपने एम्प्लॉयज को, मोटिवेट कैसे रखते हो, और भी बहुत चीजें हैं। पर उससे पहले प्रिपेयर करके आओ थोड़ा, ठीक है? पहले Okay. बेसिक एचआर लगा लो, देन स्ट्रीमलाइन इट आउट, और फिर आप उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है? Okay, ma'am. क्या? ओके, Yes. चलो, ओके अंजी, ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू, बट प्रिपेयर इट विद अदर मेंटर्स फर्स्ट। Okay, ma'am. Thank ओके, you, ma'am.